I'm Dr. Dushyant Patel. Welcome to my YouTube channel DGP Maths. So today we are going to study our second chapter, which is determinant and matrices. Before going to matrices, we have to study determinant. That what is determinant, what is the order of determinant, what are the elements of determinant, how to find value of determinant. So friend, like plus, minus, multiplication and division, determinant is also a symbol or operation, we can say. We can find a particular value of a given determinant and we can place it anywhere we want. So friends, we start with second order determinant. What is second order determinant? What is the order? So let's take this A1, B1, A2, B2 belongs to R. What does it mean? R set of real number, वास्तविक संख्याओं का गण. तो ये A1, B1, A2, B2 real numbers में से कुछ भी हो सकता है. Determinant is denoted by such two parallel lines. Be careful, friend. In matrix and in determinant there is a minor difference. Determinant is denoted by two parallel lines, where matrix will be denoted by square bracket that we will see later. Now how to write this letters in this determinant? So suppose I am writing A1, B1, A2, B2. So in this way we are writing the elements of determinant. These elements could be any real numbers. Now friends, this horizontal line means A1, B1, this is said to be row. Similarly, this A2, B2 is said to be row. So A1, B1 is said to be first row. A2, B2 is said to be second row. Similarly, this A1, A2, this vertical line, this said to be first column. These vertical lines are said to be column. So A1, A2 is first column. Similarly, B1, B2 is second column. So we can observe in this determinant that there are two rows, means two horizontal lines, and two columns, that is two vertical lines. Therefore, this determinant is said to be second order determinant. डिटरमिनेंट के अंदर हमेशा फ्रेंड्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही रहती है. दिस इज मस्ट. मैट्रिक्स जब हम देखेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम अलग हो सकती है, लेकिन डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ऑलवेज सेम. सो बी केयरफुल. इन डिटरमिनेंट number of rows and number of columns are always same. So what do we understand with second order determinant? So a determinant in which there are two rows and two columns. So this A1, B1, A2, B2 are said to be elements. उसके members हैं determinant के. This horizontal A1, B1 is said to be first row. This horizontal second line, that is A2, B2 is said to be second row. This vertical A1, A2 is said to be first column. This vertical second line, that is B1, B2 is said to be second column. This is not necessary that number of rows and number of columns should be always 2. It could be 3 also, that we will see that third order determinant and so on. So in third order determinant, number of rows will be 3, number of columns will be
3. So friends, once again, second order determinant means a determinant in which there are 2 rows and 2 columns. Now we have to see how to find particular value of determinant. So first of all, we will write this determinant again and we will see how to find its value. So friends, now we want to find value of this determinant. This is second order determinant. Elements are A1, B1, A2, B2. There are 2 rows. First row is A1, B1. Second row is A2, B2. There are 2 columns. First column is A1, A2 and second column is B1, B2. Now there is one more thing friends. This A1, B2 is said to be diagonal of this determinant. In this case, it is said to be principal diagonal or main diagonal. Now friends, how to evaluate determinant? How to find value of determinant? So, for this determinant, we write this determinant is equal to, we will multiply this A1 into B2, that is A1 into B2 and then minus sign and then we multiply A2 into B1. So friends, be careful. First of all, we have to multiply this A1 B2, then compulsory there will be a minus sign and then we will multiply this 2 element, that is A2 B1, and then whatever is the answer of this, that will be a particular value of second order determinant. For example, I want to find value of this determinant. This is again second order determinant. There are 2 rows. 2, 4 is the first row. 5, 7 is the second row. There are 2 columns. 2, 5 is the first column. 4, 7 is the second column. Now I want to evaluate this determinant. I want to find value of this determinant. So how to find that value? Let's see. So first what we will do, we will multiply its principal diagonal, that is 2 into 7. Then compulsory there will be minus sign and then we multiply this 2, that is 5 into 4. So this is equal to 14 minus 20. So this is equal to minus 6. So the particular value of this determinant is equal to minus 6. Friends, value of determinant could be anything. It could be positive, it could be negative, it could be 0. So this sign has nothing to do with the sign of modulus. In modulus, whenever we are taking modulus, we are getting only positive. But here it is not necessary. In determinant, answer of determinant could be positive, it could be negative, it could be 0, it could be any real number. So in this way we can solve second order determinant. So I hope it is clear that what is determinant, what is second order determinant, what is row, what is column, what is the diagonal, and then how to evaluate or find the particular value of determinant. So friends, now we want to solve example of second order determinant. So find the value of, first example is this and this is the second. So both are second order determinant because they have 2 rows and 2 columns. In second example also 2 rows and 2 columns. So both are second order determinant. So now first this, how to evaluate this? So what we do first, we will multiply this 2 first main diagonal elements.
So this will be x into w, then compulsory minus, then we multiply this 2, so that will be z into y. So this is the answer of this determinant. Because x, y, z, w are unknown, so we cannot further evaluate this. Answer of this depend on the value of x, w, z and y. Second example. Here in first row we have sin theta, cos theta. In second row we have minus cos theta and sin theta. Here theta could be anything. So how to evaluate this? So this is equal to, first of all we will multiply this 2. So we get sin theta into sin theta, then minus, then we multiply this 2. So minus cos theta into cos theta. So what we get here, sin theta into sin theta is sin square theta minus this minus cos theta into cos theta will be minus cos square theta. Now sin square theta, this minus minus will become plus. So sin square theta plus cos square theta. And we know from trigonometry, this is very common, very basic formula of trigonometry, that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So here we get 1 as the answer. So particular value of this determinant is 1. So friends, somewhere if we have written this determinant, so this will give us output of only 1. If we have written this determinant, so output of this determinant is xw minus zy. So again friends, determinant is a particular value, and we have learned here that how to find value of second order determinant. Further we are going to learn how to evaluate third order determinant. So I hope you can solve second order determinant very easily. Next example, prove that this determinant is equal to 0. We have to prove. So what we do friends, we start with LHS and we prove RHS. So in solution, LHS is equal to x, y, x, y. Again this is second order determinant because we have given 2 rows and 2 columns. In first row we have xy, in second row we have xy, in first column we have xx, in second column we have yy. So how to solve this friend? So first we multiply these two elements, so x into y minus, then we multiply these two elements, so xy. So now we have xy minus xy, which is equal to 0, which we want to prove, so which is RHS. So this is very easy example. I hope it is clear to everyone. Third example, solve the equation second order determinant whose elements are x minus 5, 3 in first row, 2x in second row is equal to 0. So friend, how it is equation? If we solve this determinant on left hand side, we will get something in terms of x, which is given as 0. So we will get some algebraic expression in terms of x, and then we need to solve it, and we have to find the value of variable which is x in our case. So how to start the example? We will write whatever we have given. So x minus 5, 3, 2, x, this is equal to 0, and we want to solve this. So what we do, first we will solve this determinant. So how to solve this determinant? So x minus 5 into x, then minus, then 2 into 3, that is 6 is equal to 0. So this will be equal to x square minus 5x, x into x, x square minus 5 into x minus 5x minus 6 equal to 0. So now this becomes quadratic equation, and we need to solve this quadratic equation to find out the
value of x. So how to solve this quadratic equation? We need to factorize it. So here we have minus 6 as a constant term. The coefficient of x square is 1, so we will multiply minus 6 with coefficient of x square, that is 1, so we get minus 6. अब हमें माइनस 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिसका एडिशन माइनस 5 हो और जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 हो. सो हाउ वी विल डू इट? सो x स्क्वायर माइनस 6x plus x minus 6 equal to 0. So minus 6 into 1 is minus 6 and minus 6x plus x, that is minus 5x. So what we do? From this two term we will take x common. So x common, so we get x minus 6 over here, plus from this let's take 1 common, so we get x minus 6. Now from both the term we can take x minus 6 common, so x minus 6 common, so we get x over here plus 1 over here, this is equal to 0, so we get x minus 6 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. So from this x equal to 6 and from this x equal to minus 1. So since this is quadratic equation, we are getting two values of x. X is equal to 6 and x is equal to minus 1. So solution of this equation is x is equal to 6 and x is equal to minus 1. Now friends, what do we interpret with this solution? अगर हम ये x की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज 6 को इस डिटरमिनेंट में हम रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है. लेट्स चेक, वेरीफाई करते हैं हम इस एग्जांपल को. तो x इक्वल टू 6 के लिए हम वेरीफाई करते हैं, तो x इक्वल टू 6 इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 6 minus 5, that is 1, this is 3, this is 2 and x, तो x हमने 6 लिया है. अब अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, सो व्हाट वी गेट? 1 into 6, that is 6, minus 2 into 3, that is 6, which is equal to 0. That means हमें जो x की वैल्यू मिली है वो करेक्ट है. The same will happen with minus 1 also. Let's check for that also. So x equal to minus 1. यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू minus 1 पुट कर देते हैं. तो minus 1 minus 5 is minus 6. So minus 6, this is 3, this is 2 and x is equal to minus 1. So this is equal to minus 6 into minus 1, that is 6, minus 2 into 3, that is 6. So again we are getting 0. So that means our both the answers are satisfying our equation, so our value is correct. So in this way we can verify our answer. So I hope friends it is clear that how to solve equation which is of determinant type. जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन के अंदर डिटरमिनेंट है तो हम उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा एल्जेब्रिक, उस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी. So now friends, third order determinant, we have a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. These are the elements which belongs to R. So like in second order determinant we are taking third order determinant. Again its symbol is two parallel lines. This a1, b1, c1 is said to be first row. This a2, b2, c2 is said to be second row. a3, b3, c3 is said to be third row. So horizontal lines, horizontal elements are said to be row. Similarly, vertical elements, so a1, a2, a3 is said to be first column. b1, b2, b3 is said to be second column.
C1, C2, C3 is said to be third column. So in this determinant we have 3 rows and 3 columns. Therefore this determinant is said to be third order determinant. Once again friend, in determinant number of rows and number of columns are always same. So in third order determinant we have always 3 rows and 3 columns. Now we have to see how to solve थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. जैसे हमने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड की थी, सिमिलरली हमें अभी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है. So friends, now we will see how to solve third order determinant. Friends, our most of the examples are of second order and third order. So be careful while evaluating the value of third order determinant. So determinant can be solved from any row or any column, but here we are going to solve this determinant or we are going to find its particular value using first row. हम first row की help से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर की भी जरूर पड़ेगी. तो वी स्टार्ट विथ A1. फॉर दिस A1 वी विल राइट प्लस. सो A1 के आगे हमें प्लस लिखना है. ये फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए उसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बट हियर A1 इज द साइन बिफोर A1 इज प्लस. A1 कुड बी नेगेटिव, ये A1 एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस लेंगे. अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, बी केयरफुल. यहाँ पे A1 किस पर्टिकुलर रो में और किस पर्टिकुलर कॉलम में है. सो A1 इज इन फर्स्ट रो and in first column. So what we will do over here friends, हमें अपने फिंगर्स या पेन की मदद से क्या करना है, A1 जिस भी रो और कॉलम में है उसे आप कवर कर दीजिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कवर कर रहा हूँ. आपको भी सॉल्व करते समय ये करना है. तो अब हमें क्या दिख रहा है, बाकी B2, C2, B3, C3. तो हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में यहाँ जो भी बाकी रह गया वो लिखना है, दैट इज B2, C2, then B3 and C3. So once again friends, यहाँ पे हमने A1 लिया. A1 जिस रो और कॉलम में है उसे आप कवर कर दीजिए, जो भी रहता है B2, C2, B3, C3 that we have wrote over here. Now compulsory we have minus sign. Now we will write this element, that is B1. So B1, अब हम फिर से सेम वही टेक्निक करेंगे. B1 किस रो में है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. तो आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को कवर कर दीजिए. तो क्या रहता है हमारे पास, A2, C2, A3, C3. So that we will write over here. So we have A2, then C2, A3 and C3. So again friend, B1 लिया, उसके आगे साइन हमने माइनस रखी, माइनस B1 जिस पर्टिकुलर कॉलम और रो में है उसे हमने कवर किया, जो भी रहता है उसे हमने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स को रख दिए. नाउ वी विल राइट हियर कंपल्सरी प्लस साइन. सो प्लस, देन वी राइट C1, और फिर से फ्रेंड्स हम आगे के जैसे ही C1 जिस रो और कॉलम में है उसे हम कवर कर देंगे, जो भी बाकी रहता है उसे हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिख देंगे. तो C1 फर्स्ट रो में है और लास्ट कॉलम में है, दैट इज थर्ड कॉलम, उसे कवर कर देते हैं हम. तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, A2, B2, A3, B3. So that we will write over here. So A2, B2, A3, B3. So once again friend, हमने यहाँ पे प्लस C1 लिया. C1 को आप कवर कर दो, जो भी बाकी रहता है A2, B2, A3, B3 वो हमने यहाँ पे
लिख दिया। तो फिर से फ्रेंड्स इसकी साइन कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, so we start here plus minus plus, so be careful. Here we are solving this determinant with the help of first row. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट रो की हेल्प से ही करें, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर सिंप्लिसिटी हमने सिर्फ फर्स्ट रो ही यूज की है। तो फिर से इसके लिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे a1 को कवर कर दीजिए, जो भी बाकी रहा वो हमने सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिख दिया। फिर माइनस b1 है, यहाँ पे b1 लिखिए, b1 को कवर कर दीजिए, जिस रो कॉलम में जो भी रह गया उसे हमने सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिखा। फिर प्लस c1 को कवर कर दीजिए, जो भी बाकी रहता है उसे हमने सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिख दिया। अब फ्रेंड्स जैसे हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, सिमिलर मेथड्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो a1 इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, b2c3 इनटू b2c3 माइनस b3c2। सो यहां पे मैं ब्रैकेट कर देता हूं, b2c3 माइनस b3c2, फिर ये माइनस b1 है, फिर से ब्रैकेट, इसका सॉल्यूशन a2c3 माइनस a3c2 देन प्लस c1, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो a2 b3 माइनस a3 b2, फिर यहां पे जो भी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को इस वे में सॉल्व करते हैं। हमें ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, हमें ये मेथड याद रखनी है कि हमने फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिया, उसे कवर कर दिया, जो भी रह गया उसे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिखा, फिर माइनस सेकंड एलिमेंट, फिर b1 को कवर कर दिया, जो भी रह गया उसे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिखा, फिर प्लस लास्ट एलिमेंट c1 उसको कवर कर दिया, फिर जो भी रह गया उसे हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में लिख दिया। और सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सबको पता चल गया होगा। अब हम इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं ताकि आपको पता चले कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स आप इसकी बराबर प्रैक्टिस करिए तो ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप कहीं माइनस प्लस या उसमें कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप इसकी इनफ प्रैक्टिस करिए। दूसरा फ्रेंड्स, ये जो मेथड है किसी किसी बुक्स में ये मेथड नहीं दी हुई है, डायरेक्ट ये ही दिया हुआ है, लेकिन हमें एज अ बिगिनर ये यूज करना ही है ताकि हमारी मिस्टेक्स कम हो। Example number 4, find value of this determinant 3, 1, 2, 4, minus 5, 0, 1, 3, 5. So friends, here we can see we have 3 rows, that is horizontal lines, and 3 columns, that is vertical lines. So this determinant is third order determinant. इसके पहले हमने थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो a1 b1 c1 पर से सीखा था। अब हम यहाँ पे रियल एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसकी हेल्प से लिख रहे हैं। तो पहले हम वो डिटरमिनेंट लिख देते हैं। सो फर्स्ट रो इज 3, 1, 2, 4, minus 5, 0, 1, 3, 5। नाउ फ्रेंड्स, जैसे हमने आगे किया था, सबसे पहले हम इसे फर्स्ट रो से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एलिमेंट 3 था, +3, इसलिए हमने 3 लिखा। सपोज ये -3 होता तो हम यहाँ पे -3 लिखते। उसके हमें आगे साइन जो भी है प्लस करनी है, लेकिन इसकी साइन जो है वो हम रहने देंगे। तो सपोज ये अगर -3 होता तो यहाँ पे -3 हो जाता, अगर ये +3 है तो यहाँ पे +3 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, 3 जिस रो और कॉलम में है हम उसे कवर कर देंगे।
तो 3 किस रो और कॉलम में? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसे हमने कवर कर दिया। सो वी लेफ्ट विथ -5 0 3 5. Now compulsory minus. Next is 1. So we write here 1 और फिर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे? 1 जिस रो और कॉलम में है उसे कवर करेंगे। सो 1 हमारा है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसे हम कवर कर देते हैं। सो वी लेफ्ट विथ 4 0 1 5. सो वी राइट ओवर हियर 4 0 1 5. इसे हमने फिर से चेक भी कर लिया एक बार, तो 4 0 1 5. फ्रेंड्स, यहां पे अगर हमारे पास -1 होता तो हम क्या लिखते हैं? माइनस और फिर ब्रैकेट में -1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है। फिर बाद में यहाँ जो भी एलिमेंट्स है वो हमें लिखना है। तो फिर से अगर -1 यहाँ पे होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस ब्रैकेट में -1, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए -1। तो इसके लिए प्लस फिर माइनस, नेक्स्ट में प्लस, तो प्लस ये वाला एलिमेंट 2, फिर से सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 2 जिस रो में है दैट इज फर्स्ट रो और जिस कॉलम में है उसे कवर करिए। सो वी लेफ्ट विथ 4 5 1 3. सो दैट वी विल राइट ओवर हियर। सो 4 5 1 3. सो फिर से फ्रेंड्स एक बार चेक कर लीजिए, हमने 2 को कवर कर लिया। 4 5 1 3. तो फ्रेंड्स ये स्टेप्स आप सभी को करना है और आप उसे चेक भी करिए लिखने के बाद, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अभी 3, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है। सो -5 into 5 दैट इज -25, देन -3 into 0 दैट इज 0, then -1 इसे सॉल्व करना है। सो 4 into 5 that is 20 minus 1 into 0 that is 0, plus 2 into 4 into 3 that is 12, then minus 1 into -5 that is -5. फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर -5 है, इसलिए हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ताकि माइनस प्लस की कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। So 3 into this is -25 minus 0 is -25, minus 1 into 20 minus 0 is 20, plus 2 12, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, so this will be plus 5. So friends, now this is equals to 3 into -25 that is -75. This will be -1 into 20 that is -20, plus 2 into 12 plus 5 that is 17. So -75 minus 20 is -95, plus 2 into 17 that is 34. So this is equal to -95 plus 34. So answer will be minus. So -61 is the correct answer of this example. तो इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिली -61। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए। हमने पहले डिटरमिनेंट लिख दिया, फर्स्ट एलिमेंट जो भी है लिखा उसके आगे साइन प्लस होगी। यहाँ पे अगर -3 है तो वो -3 रहेगा। हमने फर्स्ट रो और कॉलम को कवर कर दिया, फिर हमने डिटरमिनेंट लिख दिया, फिर -1 इसे कवर कर दिया 4 0 1 5, फिर हमने +2 लिखा, इसे कवर कर दिया 4 5 1 3। सो प्लस माइनस प्लस इस तरह से हमें याद रखना है। फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो 3 -5 into 5 that is -25, then 3 into 0 that is 0। जैसे हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। -1 into 4 into 5 that is 20, -1 into 0 that is 0, plus 2 into 4 into 3 is 12, -1 into -5 is -5। तो यहाँ पे अंदर -5 था इसलिए हमने एक ब्रैकेट यूज किया ताकि मिस्टेक ना हो। सो 3 into -25, -1 into 20 minus 0 is 20, plus
2 into 12, this will be minus minus plus, so 12 plus 5, so 3 into minus 25 is minus 75, minus 1 into 20 is minus 20, and 2 into 12 plus 5 is 17, so minus 95, minus 75 minus 20 is minus 95, 2 into 17, that is 34, so minus 95 plus 34 is minus 61. So I hope friend it is clear to everyone कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इसकी इनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपकी माइनस प्लस की मिस्टेक होने के काफी सारे चांसेस हैं। तो आप बुक में से एक्सरसाइज के या हमने जो भी असाइनमेंट्स दिए हैं उसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिए। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की फिर से एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 5, फाइंड वैल्यू ऑफ -4 -2 -1 0 1 3 2 0 4। सो फिर से ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है बिकॉज़ इट इज हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हमें इसे सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम डिटरमिनेंट लिख देते हैं -4 -2 -1 0 1 3 2 0 4। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे हम? प्लस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स माइनस लिए हैं ताकि आपको पता चले कि अगर माइनस एलिमेंट हो तो क्या हो। तो यहाँ पे हमें प्लस लिखना है, तो प्लस लिखा हमने, फिर यहाँ पे -4 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो वो क्या आ गया यहाँ पे 4 -4। यहाँ पे अगर +4 होता तो वो +4 रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि -4 जिस रो और कॉलम में उसे आप कवर कर दीजिए। सो व्हाट वी गेट 1 3 0 4 1 3 0 4। नाउ फ्रेंड्स कंपल्सरी माइनस, अब क्या है यहाँ पे -2 है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं -2। नेक्स्ट स्टेप में उसे हम माइनस माइनस +2 कर देंगे। फिर -2 जिस रो और कॉलम में उसे कवर करो, क्या मिल रहा है हमें? 0 3 2 4। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे हम? 0 3 2 4 0 3 2 4। सो प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट में यहाँ पे आएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -1 है इसलिए हम यहाँ पे -1 लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम उसका सिंप्लीफिकेशन प्लस माइनस माइनस करेंगे। सो -1 अभी फिर से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कवर करिए, क्या मिल रहा है हमें? 0 1 2 0 0 1 2 0। तो फ्रेंड्स ये हमें बहुत ही केयरफुल होके लिखना है, हमें एक बार पेन और फिंगर रख के चेक भी कर लेना है कि वो सही लिखा है या नहीं। कभी-कभी स्टूडेंट्स जल्दी करने जाते हैं और एलिमेंट्स लिखने में मिस्टेक कर लेते हैं, फिर बाद में आप कितना भी उसका सिंप्लीफिकेशन करो आंसर हमारा गलत ही आने वाला है। तो क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन? -4 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 0 इंटू 3 इज 0। अब हम माइनस माइनस को यहाँ पे प्लस कर देंगे, सो +2 इसे सॉल्व करते हैं। सो 0 इंटू 4 दिस इज 0 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6। नाउ दिस प्लस माइनस विल बी -1 0 इंटू 0 इज 0। फ्रेंड्स कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं 0 इंटू 0 क्या है, तो 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 2 इंटू 1 इज 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? -4 4 माइनस 0 इज 4 प्लस 2 0 माइनस 6 इज -6 -1 0 माइनस 2 इज -2। नेक्स्ट -4 इंटू 4 -16 2 इंटू -6 -12 और यहाँ पे बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, सो -12 और ये -1 इंटू -2 दैट इज +2 बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, सो +2। तो ये हो गया फ्रेंड्स -28 + 2, सो दिस इज इक्वल टू -26 इज द आंसर। तो फ्रेंड्स डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें पॉजिटिव नेगेटिव 0 इट कुड बी एनीथिंग। तो आई होप फ्रेंड्स कि अब आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये जो फर्स्ट स्टेप लिखे वो आपको बहुत ही केयरफुल लिखना है।